So if your spectrum does not have any carbonyl signal, if that is missing, तो इसका मतलब है कि carbonyl is absent in your molecule. That means कि जितने भी functional groups हमने discuss किए हैं, they are not present in your molecule. तो एक तरह से short listing हो जाएगी, क्योंकि आप carbonyl के बारे में नहीं सोचेंगे, so you don't have aldehydes, ketones, esters, acids, anhydrides, acid halides. लेकिन आपके molecule में ज़ाहिर है कोई और functional group तो होगा. So if your molecule has an alcohol functional group, तो उसकी जो क्या कहते हैं diagnostic peak है, that is the OH stretch, and that OH stretch appears around 33 to 3400 per centimeter, and a confirmatory signal may also appear around 1000 to 1300 per centimeter for the CO absorption. ज़ाहिर है अल्कोहल में जो OH होगा, the oxygen is attached to a carbon, the carbon oxygen single bond stretch जो है that you can see around 1000 to 1300 per centimeter. लेकिन जो 3300 or 3400 की peak है, that is for the OH stretch. But it may vary. It may go up to 3600 or even 3650 per centimeter if you have a free OH. So the hydroxyl group could be in free form, or it could also be hydrogen bonded. Hydrogen bonding is very common or normal in alcohol functional group containing molecules, but that depends upon the sample or the preparation of the sample. So if you have a concentrated alcohol या pure alcohol है, तो उसमें hydrogen bonding की chances बहुत ज़्यादा होंगी, and in that case the peak would be a broad peak, and that will appear around 33 to 3400 per centimeter. But if you have a free OH signal that is without hydrogen bonding, then you will get a sharp peak at around 3600 to 3650 per centimeter. And if your alcohol is dissolved in a solvent, then you might see both the signals. Both the signals से मुराद ये है कि 3400 की जो broad peak है वो भी नजर आएगी, और 3600 पे जो sharp peak है वो भी नजर आएगी. What happens is कि अगर हमारे पास कोई alcohol है, for example ethanol है, and you're going to record the IR spectrum of pure ethanol. अब उसमें सिर्फ ethanol के molecules होंगे, तो ज़ाहिर है उसमें hydrogen bonding की chances बहुत ज़्यादा होंगे, because it contains molecules of the alcohol only. But if you prepare a solution of this alcohol in a solvent that does not participate itself in hydrogen bonding, for example carbon tetrachloride आप use करें और उसमें अपना sample dissolve करने की कोशिश करें. So if you have a solution of this alcohol in carbon tetrachloride, तो उसमें फिर ज़ाहिर है solvent के molecules बीच में आ जाते हैं, that may interfere with the hydrogen bonding. और अगर आपका dilute solution है, मतलब बहुत ज़्यादा dilute नहीं है, but it is dilute solution, तो उस केस में आपको दोनों signals नजर आएंगे. But आप further dilution करें और solvent के जो concentration वो increase कर दें, then आपका जो alcohol है, that will be one of the molecule would be far away from another molecule, that will interfere with the hydrogen bonding जो solvent के molecules हैं. So in that case you will get this free OH signal, that is a sharp signal. So you might see three types of signals. This is a broad signal around 3400 per centimeter or 3300 per centimeter. If you have a relatively dilute solution, so here you can see this broad peak as well as this sharp peak for free OH, and this broad peak is for the hydrogen bonded OH. But if you have a very dilute solution, then you won't see the hydrogen bonded peak at around 3400 per centimeter, but you will see only the sharp signal at 3600 per centimeter. Now this free OH signal, this sharp signal may sometimes be used for differentiating between primary, secondary, tertiary and phenolic OH groups. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है, you can see here the values for a primary OH stretch,
secondary OH stretch, tertiary OH stretch, and a phenolic OH stretch. And you can see that it's only a difference of 10 per centimeter. That is a very minute difference. Or when you take it on a scale from 400 to 4000 per centimeter, ये बहुत कम difference है. तो आपको काफी zoom in करना पड़ेगा, आपको calibration बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, so as to have the peak at the correct wave number. ठीक है, तो अगर आपके पास वेव नंबर या जो आपकी जो स्पेक्ट्रम है या मशीन है वो अच्छे कैलिब्रेशन के साथ आप यूज करें तो फिर आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे. अदरवाइज चूंकि डिफरेंस इतना कम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के OH स्ट्रेच में, जो शार्प OH स्ट्रेच है, so then you won't be able to differentiate. लेकिन इसकी जो डिफरेंशिएशन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की, वो आप CO जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच है उससे आप आसानी से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन प्लस कैलिब्रेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. Okay, so here we have a couple of spectra. The first one is an aliphatic normal alcohol जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है. It's a straight chain जिसके साथ अल्कोहल एक एंड पे अटैच है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक broad signal for the OH stretch around 3300 per centimeter, or that shows it's a hydrogen bonded OH stretch. Additionally, you can see here around 1000 per centimeter you have this CO stretching vibration. चूंकि चेन में आपके पास एक ही चेन में आपके पास यहाँ 5-6 कार्बन अटैच हैं, so you see this long chain band for the carbon atoms, and जो शायद पहले भी एक स्पेक्ट्रम में हम देख चुके हैं. So you see this long chain when you have straight chain having 6 to 7 carbon atoms. But if you don't have a long chain, then this peak would be absent. This is around 712 to 700 per centimeter. And additionally, you see this CH stretch, but that is for the sp3 CH. आप देख सकते हैं सारे sp3 carbon हैं, and they have hydrogens attached to it. So we have the sp3 CH stretching as well. It's a pretty simple molecule. तो आपको जो spectrum भी नजर आ रहा है वो काफी simple है. And then we come here to this phenol, और phenol में आप देख सकते हैं कि we have an aromatic ring with an OH, और para position पे आपके पास methyl group भी है. So again we have this hydrogen bonded broad OH stretch at around 3300 per centimeter, and again this CO stretch around 1200 per centimeter और 1100. यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें और पीक्स मर्ज हो गई हैं, इसलिए इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है. एंड बिकॉज इट्स एन एरोमेटिक रिंग, तो आपको एरोमेटिक की पीक्स भी नजर आएंगी, बट दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप. अभी फिलहाल जो है वो आप OH पे फोकस करें. ओके, नाउ इफ योर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव OH, जो आपको 3300 पर सेंटीमीटर या 3400 पे ब्रॉड पीक नजर आ रही है वो एब्सेंट है, और या आपको 3600 पे कोई शार्प पीक नजर नहीं आ रही, इट मींस योर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव OH stretch, and that means your molecule does not have an alcohol functional group. So what it could be, carbonyl भी नहीं है, alcohol भी नहीं है, तो it could be an amine. और अगर amines हैं तो फिर उसमें जो diagnostic peaks हैं वो कौन कौन सी होंगी. सबसे पहले तो आप NH stretch देखेंगे. So go and search for an NH stretching vibration or peak. That is a medium absorption around 33 to 3500 per centimeter. तो इसकी जो range है वो overlap करती है with the OH stretch, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि जो OH की peak है वो थोड़ी सी ज़्यादा intensity की होती है, and this NH stretch is a medium absorption या medium intensity की peak होती है around 33 to 3500 per centimeter. अब amines जो हैं आपके पास primary amines भी हो सकते हैं, secondary amine भी हो सकते हैं, tertiary amine भी हो सकते हैं. तो अगर primary amine है तो आपके पास कार्बन चेन जो है या कार्बन के साथ NH2 लगा होगा. If it is a secondary amine,
तो फिर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स और प्लस एक हाइड्रोजन अटैच होगा, और अगर टर्शियरी अमीन है तो उसके साथ तीनों अल्काइल ग्रुप्स होंगे एंड यू डोंट हैव अ हाइड्रोजन। तो चूंकि जो डायग्नोस्टिक पीक है दैट इज द NH स्ट्रेच, तो प्राइमरी अमीन में चूंकि 2 NH बॉन्ड्स हैं, NH2 होता है, तो उसमें आपको 2 सिग्नल नजर आएंगे। ये 2 सिग्नल्स जो हैं अलग अलग नहीं होंगे। These two signals appear usually in the form of a doublet type of signal. If you have a secondary amine, तो उसमें चूंकि NH होता है, you have only one NH bond, so that will give you only one peak. And if you have a tertiary amine, then you don't have, obviously you don't have NH bond, so you don't see the NH stretch. Additionally, इसके साथ आप NH बेंडिंग वाइब्रेशन देख सकते हैं एट अराउंड 1560 to 1640। ये पीक अगर आपको याद हो तो हम जब एमाइड्स डिस्कस कर रहे थे, तो एमाइड्स में भी आपके पास NH बॉन्ड हो सकता है, और उसमें भी शायद हमने यही डिस्कस किया था। और उसमें जो एमाइड का कार्बोनिल है उसके साथ उसकी जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो कभी कभी ओवरलैप भी हो जाती है 15 to 1600 per centimeter के रेंज में। And then we have this CN single bond stretch because we have amines, so nitrogen के साथ carbon single bond के जरिए attach हो सकता है, and that will appear around 1000 to 1350 per centimeter. Okay, so these are some of the diagnostic peaks for amines. Here we have some examples. The first one is a primary amine. You see the NH2 here, and here is this medium or low intensity peak that appears in the form of a tablet for this NH2 stretch here, right? And here we have the CN stretch around 1100 1000 per centimeter, and you can see the bending vibration here for the NH around 15 to 1600 per centimeter. In case of this dibutyl amine, now dibutyl amine is a secondary amine. Secondary amine में आपको पता है कि एक NH bond होगा, एक NH bond will appear in the form of a single peak, not like this. ये जो NH2 है, it gives a doublet because of the symmetric and asymmetric stretch. I think we have discussed it earlier as well. And here you see this CN stretch, and the NH out of plane bending vibration is also present here, which is quite intense. So that is the difference between a primary and a secondary amine. Primary में आपको 2 peaks नजर आएंगी, secondary में आपको single peak नजर आएगी. In tertiary amines, when you don't have any NH bond, so you don't see this stretching vibration here in this region around 3600 या 3400 per centimeter, right? लेकिन ज़ाहिर टर्शियरी अमीन है तो उसमें भी आपको CN स्ट्रेच, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच आपको नजर आएगा।